for the benefit of all of you, a little bit of background on what ISHEL is and why we are doing the things that we are doing and what are the things we are doing. So ISHEL stands for Indigenous Sport Horse Equestrian League. By the name of it, we are working towards the indigenous breed of horses of India. And the best fit for horses in the modern days is actually the equestrian sport arena. And that is where we are trying to find a space for our indigenous horse breeds. So that in crux is what ISHEL is doing. Obviously, we are running with a lot of objectives, and those objectives, some of them would include training the people, representing the issues in front of the government and other authorities, talking to institutions who are in this field and trying to get good things through into the channel. But I think, and we started 2 years back, I think one of the most important things that we need in India, and especially in the indigenous horse circles today, is the need for education. It's the need for knowledge, because that itself will form the basis of any advancements that we want to do in the indigenous breed. Yes, there have been efforts every now and then. There have been great personalities who are doing stuff for the indigenous horses, but there is no kind of collective and concerted effort in a direction that is more beneficial for a long term. And we had a lot of discussions in the membership of ISHEL, and the one thing that we came out with is the need for education, the need for knowledge. And the knowledge will come with when people sit on a table and brainstorm. Now, we started during the Corona times, and obviously Zoom was, or the online sessions was the way to go. And one of the ways in which we can connect to more and more people who are spread across the geography is basically through the online medium. So the two things that we do on the online medium, we started with conversations, wherein we speak to people from the industry, like coaches, like doctors, vets, for example, the sports people, and a lot of that kind of a profile. In those conversations, we invite people from everywhere. They can join and they can listen to the conversation with one speaker. This session that we are in, who are connected and who are from, obviously we will not be able to have hundreds of people who are out there who have the knowledge, but we select a few people, get them onto the discussion. Obviously we'll get a lot of good outcome from such discussions. So that is what we are doing. So during the Corona times, we were connected online, and online is a good medium that we can reach to people across the various geographic regions. We started with having conversations with people from the domain who have knowledge, like coaches and riders and sports people and judges and horse trainers, vets. And all those conversations are available online on our YouTube channel as well. Then this year we started something called Think Tank Discussion. In fact, last year, December, we had the first one. So the Think Tank Discussions is basically having a collection of people on the table, selecting a topic and having a discussion on that topic. So obviously people on the table are people who have experience or the background in that topic. Now it is difficult to have hundreds of people out there who have the knowledge to have one conversations. It becomes a big mess. So a handful of people are collected and we sit together. It's basically for ISHEL, it is a way to connect to people out there who are our members or non-members, and for people out there to know more about ISHEL and have these conversations as well. So that is the Think Tank Discussions. That is the reason why we are gathered over here today. And we are discussing the topic of the equine bad practices in India. So now, this discussion, I'll keep it bilingual, so English and Hindi. So feel free to speak whatever language you are comfortable with. In fact, the people who are at the grassroots who are not comfortable with English will understand Hindi. The reason is, we need to take the message across, right? So, but be comfortable in whatever language
you would like to. It's primarily for India. It is primarily for the people who are in the equestrian domain in India, especially with the indigenous horses. So yeah, so that is what it is. Any questions before we start the conversation or the discussion? We have to restrict ourselves to those three aspects that circulated to us. Is that correct? Those aspects were definitely targeted towards the speakers. That is what we thought that it will give a flow to the conversation. But during the conversations, we can actually divert our discussion beyond those questions that were circulated as well. So it's fine. So let me just start with the questions that we had targeted for all of you as speakers. In fact, different questions were targeted for different speakers. So the speakers that we have today is yourself, Dr. Ramanathan, then and you are based in Gujarat. Then we have Anish Gajjar, he's also based in Gujarat. We have Anirudh Singh Waghela, he's also based in Gujarat. And I think Amarjit, you are also based in Gujarat, right? Yes. Yes, I am Okay. from Gujarat only. Lovely. I am, profession-wise and living-wise, I'm based out of South Africa, so I live in Johannesburg. But every 2-3 months, I come to India. I have horses over here in Rajasthan. I have other business activities due to which I keep on traveling. Right now, I am in Rajasthan at my stables, and we are doing a 3-day endurance training workshop for beginners. So I'm in the middle of that training, and I'm sitting in a village um, area. So if the connection drops, just try and understand that that is the reason why the connection would drop. I'm not on a Wi-Fi connection, but by God's grace, the connection is very good. So Dr. Ramanathan, I'll actually start with you. Um, the concept of the understanding of our horses going through the bad practices is well understood by the people who have the knowledge of seeing that this particular thing that I'm seeing in front of me is a bad practice. However, on the ground, where people who are party to the or who carry out these bad practices, sometimes I feel that they don't even understand that this is a bad practice. किसी ने किया था, हम भी वही कर रहे हैं, right? So See, there is a lot of the first thing is, to capture tradition this and involved talk to with people. horses. See, Yes, wherever the sir. horses are all over the world, Mhm. there is an element of tradition that goes on and on. Mhm. Whether it is good or bad, the horses only will have to decide. But you should understand that there has been an influence of tradition, because I have always seen this as a child, so I will continue. Why have I seen this as a child? Because my great grandfather did that. So, Mhm. not understanding why it was done. So, the first question to answer, can I talk about the first question? Absolutely, sir. Okay. Absolutely, sir. The first thing is an average horse owner or a horseman able to understand the exhibition of pain in the horse? Absolutely. The answer from my side would be is yes and no, where they can spot pain when it is beyond a certain threshold, like a colic or a very acute lameness, but a subclinical pain, a pain that is not seen by untrained eye, most horse people fail to recognize until it becomes very painful or requires a very dire emergency situation. In that sense, I would like to say a few words to the emerging horse owners and the established horse owners that when you watch a horse all the time and the horse is away, if it is kept in a herd, and the herd behavior is very important for horses, if they are found separate, even though they are not painful, there is something wrong with the horse. That's the first thing that you need to understand when it is in a herd situation. Secondly, when the horse is stable, there are certain things that each horse does
to its circadian rhythm of that particular stall area or the riding arena or the breeding setup or whichever where it is. Horses are creatures of habits. They do fixed things at fixed hours. So when you see a horse during the riding period, when you're about to saddle and they are sitting down, that's not good. So I think the astute observation is what is important. And this is universal. It is nothing to do with horses in India or Indian horse breeders or horse owners. It is throughout the world that the horse owners and horse breeders in the past, say, post 1950, have been rich people, people who can afford, people who have bought cars, and people who wants to live with the Joneses. So those are the people we are having a large population, not only here, even in the United States, where I got trained and I worked. It's very common. It is nothing belittling the effort of the horse owners. It is just the lack of ability to observe. So observation, I think, is the key factor here from the horse owners. They keep watching more, keep recognizing normalcy, then you start spotting the abnormal behavior, which is usually linked with pain with horses. So the answer to that question from my side is yes and no. Everybody understands colics, but colic is a very pain, if I should say, and it's an exponential term for pain. It's extremely painful condition. That's why the horse is colic. And horses, by in general, can usually have a very high pain threshold because they are slight. Because they are slight species. I'm done. Anybody can follow. Yes, sir. Yes. Very well said, sir. But more in the indigenous sector. Anish, I will come to you. Yes. I have seen you very well connected with the Marwari horses because that's how I know you. With the introductions that I've had of you and we spoke and all, it is also understood that you have traveled around the world and you have seen other practices outside India. And obviously, we have all those practices in India as well, but in a more organized equestrian space. Talking about the space that the indigenous horses are in, and perhaps that's where more horses are there and more people who are connected to the horses, the large community out there in the rural setup and all, who don't have access to knowledge and all. There is a management practice. I'm not a criticize. I don't criticize the traditional practices. They have reasoning to it. That's how horses have been in our society for ages, even before the modern education. But at the current stage that we are sitting with, and more to do with the state that the indigenous horses are, it's quite bewildering. So now, the comparison between what you see overseas as equine management and what you see in India as equine management in the indigenous space, what are the gaps? I'm sure the gap is there, and you will have, um, kind of there might be multiple points that we can talk about. But what are some of the basic gaps that are there between the equine management practices overseas and in India, if we have to compare, or if you have to compare with your uh, kind of experience? Right. So first, I'll talk about the overall general abuse that I've seen all over the world, which is different at different levels, different sports, different uh, rural, urban, developed countries, underdeveloped countries, wherever I have been able to visit so far. So, and then the second part, I'll cover specifically what you asked me about, what is lacking in our country. So, generally, the most common field or the area where we see a lot of abuse is the racehorse industry, the racehorse industry, where they're racing till a very early age. From a very early age, they're retired at around 7 years. The retirement life again
we see it may or may not be very comfortable. Also, there is no personal touch in terms of owner and horse bond or association. It's basically just a number game. So you don't see much of intimacy or personal contact, like the way you would keep your pet dog at home. That bond is not there with that horse. Even in private farms where we see horses of other sports being stabled, the human contact is for a very limited period. I would say less than 5% people would be in touch with their horses all day. But more or less, it is, especially in our country, it's more assigned to the caretaker, and you'll just go for the weekend or you go for half an hour every day. There, the level of engagement with the horse, most of the other time, rest of the time, you're not even aware of what is going on with the horse, whether he or she is comfortable, what issues are they facing all day. So all these are very basic issues that I've encountered in most countries wherever I've seen them. Apart from racing, I would also, I think, like even certain developed countries like the USA, sports like the roping and reining, both of them have some kind of very undue pressures on the horse. The training methods, the equipment that they're using. There's a lot of debate about the Western saddle also that goes far up to the hind of the horse, where it reaches almost the loins, and there is a lot of pressure on the entire back. So forms of abuse can be seen in sports that are very old, and they developed at a certain time. The breeds were different, the times were different, the requirements were different. Now the culture has changed, the demands have changed, people have evolved and moved further. So the amount of improvement that one can expect in terms of being more in contact with your horses, more aware of their pains and more aware of the signals that they are giving you, I would feel that that's not progressed at the speed or at the rate which it should have. Now, coming to more specific in terms of what we see around us in India, I think most of us are very aware of all the thorn bits and the beating practices and everything that go around everywhere. According to me, I think the main difference between what we would call a developed country compared to us here is that there is no organized formal training at the grassroots level. It's either tradition or it's part of the culture, or the parents have taught or the grandparents have taught, somebody in the neighborhood has taught, and they are learning something. Also, social media plays a big role today in spreading the right or the wrong message. Actually, it spreads a lot more wrong things than the right things, because there is no yardstick to measure them or to correct them. So there is also another sad fate that what you see in the computer is true. Yes. It's sad, but it is true. So I think a forum like this will add a lot of importance to the existing huge negative knowledge, what I call. Right. Negative knowledge, yes, sir. Trends up also with something that gets popular on social media and then just gets followed by people who are unaware and who are just getting into this line, or people who've been there for years and somebody prominent is doing it and they just blindly follow it. The logic or the reasoning is not, they're not able to reach out to professionals or people who have had much more experience than them. And that, I think, one of the basic flaws here. If you look at some other countries, they have at the very grassroots level or very rural interior areas also, they have well-designed riding clubs, they have courses going on, they have degrees, which we are now trying to start here. But that has been a very lacking point until now. In terms of what all issues there are, right from transport of horses to the equipment that is being used. Saddle fitting, I have been very particular about pointing out in the past also, that saddle fitting is something that basically horses are very resilient animals. So like Dr. Ramanathan said, that they are not going to show that kind of extreme pain until it becomes too much. So whatever hints of pain or small
signals of pain are being expressed. Like, for example, horses that are being ridden for long distances with the wrong of saddle, they get saddle sores and the white marks appear on the back. Now, this does not stop when it's being used or misused, but it comes up after a few months, and that's when you realize that there was some wrong pressure being applied on the back. Saddle fitters are a profession that we do not have around us over here. They're very skilled in what they are doing, and there is a certain saddle that works perfectly for one horse or one rider. And if that equation changes, the saddle has to change. If the horse gains weight, loses weight, the saddle has to. People who ride, I always tell them that a saddle is not a hat for a human being that you can go buy a hat and then wear and go. It is an equipment that is an absolute contact point between the horse and the rider. And it has as much as important that I would give as that of a horseshoe, which is the contact between the horse and the foot on the ground. So there are two 100%. contact points which we can influence directly in a Yes, and third one is positive the mouth. or a negative way. Right, sir. Yeah, go ahead. So a couple of other issues also. There is a lot of frequent buying and selling in horse fairs or even privately that we see. And because of horses frequently changing hands, also a lot of their management and care gets disturbed. We can see in certain farms where horses have stayed with the owner for a long period of time. And if the owner is a responsible person, the result is much better. There are temperamental issues, there are health issues that also come up with frequent buying and selling, because somewhere they are going down the line into incapable hands also. Another issue I've seen is the awareness for vaccinations, which is drastically lacking around us. People are not aware enough to give the right vaccinations at the right time, which is definitely a very strong form of abuse, because you are exposing your horse to various diseases which most horse owners are not even aware of. When the veterinary doctor comes to our farm and visits, that's when some people start realizing that this is a sickness that is going around these days and we should be vaccinating our horses. But there needs to be certain information available to every single owner in the country where the necessary vaccines have to be pointed out and they have to be given at the right time. There has to be a Actually, the Maharashtra Indigenous Horse Owners Association's website, we have posted a vaccination guideline. I posted it almost 4-5 years ago. I'm sure it is there. It should be there. That's a kind of a comprehensive vaccination and a deworming guideline. But these are only guidelines because there are diseases that appear beyond what is written there. So we have to be open-minded to face those challenges as well. Right. Right, so Vimal, on to you. Vimal, you need to unmute yourself. We can't hear you. Oh, I'm so sorry. So I was saying that, that's a very good point, Anish, you have made, and Dr. Ramchandran as well, because, we don't have even the concept of isolation of horses, especially in the indigenous field. Horses travel from one farm to the other, and they just mingle with the horses that are already there. कोई खरीदता है, कोई बेचता है, जो खरीदता है वो जाके अपने बाड़े में घोड़े को बांध देता है, वहाँ 4 घोड़े और है, तो there is no kind of gradual introduction of horses to the rest of the horses. तो वो concept ही नहीं है. So obviously those are the things. Yes, and Anish, what were the other things that you had in mind, please? Yes, related to the travel that I've seen, I already discussed, and also most of the issues that I've seen around us in India. Of course, there are many more issues, but I've expressed what I wanted to say. In terms of riding, I feel one very important part, there are a lot of improper practice with riding and different sports that we see around us. One very common issue with all the sports is the very rough hand of the rider. The issue Very of rough, very rough. just
or using force, or not the right contact, but using force on the mouth, and with the wrong bit. wrong bit Wrong and bit, wrong training. mouth bleed, and even with the correct bits, the pull and the strength Right. of the exerted onto the mouth of the horse. I feel what is required is a firm hand, but a very soft contact where you are holding a piece of glass where you can get hurt. It has to be that kind of an emotion. But here it's only that you're holding a piece of leather or a rope, and people are not concerned about anything happening to them. The only person at risk is the horse, which is why in all sports you see this kind of jerking the mouth and abuse controlling, which I think if this one issue changes, it will reflect positively in all other sports, and somewhere it can make a big difference. I think those are good points that you make, and I so wish that we have about 20 participants in the workshop that we are doing currently, and yesterday we had classes, and we were talking about the rider's seat, and not to ride the horse on the hand but through the seat and all. Yes. And Yes. what you are saying, they could have got a common ground, so that what they are learning in the classes, that's perhaps making sense to the people out there. Yes. We also Another, if Yes. in fact, today we were having our session, a classroom session that was completely to do with saddling and the endurance saddles and the saddle fit and everything. And these people from the villages, some of them are just starting it, and some of them have horses but don't know what to do about it. For them, it was like, सर ऐसा भी होता है क्या? सैडल तो हमारे पास में काठी पड़ी है दादाजी के जमाने से, हम तो वही यूज करते हैं, हम तो कुछ देखते नहीं है. So these are some of the very important points. Yes, Dr. Ramanathan, you were saying? another very common thing that is seen, especially in indigenous horses, is tying the ropes to the legs of horses. Ankle ties, that, yeah. Ankle ties. As you know, the word pasture, in the case of horses, the word pasture itself comes originating from the word pastena, because it was a leather rope tied around the ankles in the olden times, so that the horses don't go too far in the night when the rider or the warrior is taking rest. That's why the word pastern came in. But the word pastern, those ties were loose and they could walk a long distances with it, but cannot run. Whereas now we are tying them to a pole or a post or a ring on the ground. I want to show you something. I don't know if it will be visible. This is the three-dimensional model of the horse. This is the pastern. Right. And if you see, I'm removing one after the other. This is the ungual ligament. Can you see the ligaments that are there in the pastern? Yes. These ligaments get stretched. They get stretched and they get hurt. And they hurt a lot. Absolutely. Because horses cannot exhibit too much pain until it goes beyond a certain threshold. They live with it. The fact that they are a flight species, initially the first tie, they keep on kicking at the rope, and then eventually they just leave it to the fate to handle, or some of them die. Shame. The thing is, everybody should realize that it has got 32 ligaments between the fetlock and the bone over here, which is the P3. There are 32 ligaments on one side and 32 on the other side. There are 64 ligaments here. So it is like somebody twisting someone's wrist. Okay. So pastern tying is something that we should constantly avoid, should constantly bring it to people's notice. And this is the freeze-dried leg of the horse. This is the freeze-dried leg, cut in half. So if you see, this is the pastern. You can see the kind of ligaments that it has. There are 3 major ligaments run here, and over here you can see
there are a dozen ligaments, which is there in the three-dimensional 3D printed model. So pastern tying, while it might look very insignificant or very benign, it is a serious concern because none of these horses participate in sports. So their pain is never exhibited. They are shown on weekends, they are shown on Right. shows, and they are sold and they are transported. Nobody rides them for great distances to challenge these pasterns. If you tie a pastern for a too long a period, the horse can't win a lemon and spoon race with children. So it's very important that we understand the anatomy of the pastern, how so many ligaments go to form it. So we take care of these pasterns and not tie them. So unless you put such horses to stress of training, you will never be able to understand and appreciate the importance of the tendons, bones, and ligaments. And if you keep tying the leg for too long, such horses do not perform well as athletes. Like most horses don't show any pain because they are only shown on weekends or they are shown in the big shows and they go back to their pastern tying. Nobody wants to ride them. Once you start riding them, then you will start having pastern related pain. So since you are having intentions of developing an athletic activity in indigenous horses, pastern tying is something that you must avoid at any cost. Sir, I'm so glad that you have explained it so nicely and also with the model. And I'm very tempted to ask you that, we should have a conversation dedicated to these kind of topics with you in ISHEL, where, the members and other people can take part and you can explain such important things to them. I No think that problem. was Anytime. that was very beneficial. अमरजीत, मैं आपसे पूछूंगा जी, हाँ जी, आप नेचुरल हॉर्समैनशिप पे काम करते हैं, ये मैंने सुना हाँ जी। है। आपके फेसबुक के कुछ एक पोस्ट मैंने देखे हैं दैट यू आर ट्राइंग टू डू दैट। आप घोड़ों को शोज में भी Yes. हैंडल करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन पोस्ट्स फ्रॉम जी। यू डूइंग दैट। तो Yes. सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि आप देसी घोड़ों से भी जुड़े हुए हैं काफी क्लोजली, एक जो हम अपने इक्वेस्ट्रियन हाँ जी। सर्कल में हमेशा सुनते हैं कि देसी घोड़े जो हैं बहुत तेजी करते हैं, उनका हाइपर बहुत है, इसलिए हम कांटा बिट उन पे यूज करते हैं। कांटा हाँ जी। बिट से जो है हम उनको सपोर्ट देने में या उनको संभालने में हमको आसानी होती है। हाँ कितनी जी। सच्चाई है इस बात में? इसमें सच्चाई ऐसी है कि अगर आप बीट यूज करते हो तो आप घोड़े को फोर्सफुली कंट्रोल करते हो। जो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, उसका मुंह, उसको आप एक पेन या प्रेशर देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन वो चीज वो लोग करते हैं जो घोड़े को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं, अनीश भाई है, हम है, या अनिरुद्ध है, हमारे ट्रेनिंग बेस से ही घोड़े को उसको ट्रेन इन द सेंस उसको कन्विंस करके काम करने के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं। लाइक दूसरे जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग हैं, ये रेवाल में ज्यादा होता है कि थॉर्न बीट यूज होती है। फिर हमारे मारवाड़ी हॉर्सेस में भी ऐसा होता है कि घोड़ा बहुत बड़ा है तो उसको कंट्रोल करेंगे थॉर्न बीट लगा के, तो वो चुप हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। वो सोचते हैं कि वो शांत हो रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो पेन जहाँ उसके घोड़े के दिमाग में कहीं ना कहीं जमा होता है, वो एक दिन बाहर आता है। जबकि आप अगर सॉफ्टली उसको ट्रेन करो, उसके माइंड को समझो, या फिर उसको कन्विंस करके या उसके साथ कंपेनियनशिप डेवलप करने के बाद उसको वो जो काम आप करवाना चाहते हो वो करवाने के लिए कन्विंस कर लो, तो वो एक उसको कंट्रोलिंग नहीं, लेकिन उसको कन्विंस करके अपना पार्टनर बना के वो काम करने के लिए आप राजी कर लेते हो। पर हमारे देसी घोड़ों में 90% लोग फोर्स यूज करने में मानते हैं,
जैसे कि डॉक्टर रामानाथन सर ने बोला कि ट्रेडिशन है, कि मेरे दादा ने सिखाया, उनको उनके दादा ने सिखाया और वो चला आ रहा है, लेकिन वो जो पैटर्न है वो कोई चेंज नहीं करना चाहता, या फिर उस चीज को कोई समझना नहीं चाहता है कि क्या बेहतर है। अभी इंडिया में लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, कुछ बहुत गिनती के लोग हैं जो ये समझते हैं कि घोड़े को पहले उसका माइंड समझो और उसके बाद में उसको जो भी उसके साथ करवाना है वो करो या उसको रखो। जैसे कि अनिश भाई ने भी बोला कि वो जो लगाव होता है वो होता नहीं है, और घोड़े बड़े बनाने हैं, लेकिन फिर बड़े बना के फिर उनको कंट्रोल भी करना है, वो गलत तरीके से करना है। तो एक तरह से वो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। कंट्रोल हो जाते हैं 100% है। इसमें बहुत तरह की बीट्स होती है, स्पाइक वाली रहती है, फिर वो चक्कर रहते हैं जो उसकी टंग को हर्ट करते रहते हैं। फिर एक जो ये वेडिंग हॉर्सेस रहते हैं डांस वाले, उसमें यू बीट लगाते हैं जो ये नुकीला होता है। तो वो पेन की वजह से वो सरेंडर करता है, और फिर वो तो उसके अंदर वो स्टोर होना ही है, जो कभी ना कभी वो एज एग्रेशन या बैड बिहेवियर बाहर निकलता है। तो ये गलत है कि उससे घोड़ा कंट्रोल होता है, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे। तो ये बहुत सारी ट्रेनिंग की चीजें ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पे पहले करने की होती है, उसके बाद में आप जैसे कि बीट की बात है, तो बीट बहुत तरह की होती है, अपनी स्नैफल बीट में भी, या जो प्लेन बीट्स होती है, जो अपने स्पोर्ट्स में बीट्स यूज होती है, वो पेनफुल नहीं है। वो एक ट्रेनिंग की चीज है कि आप बेसिक से उसको क्या ट्रेन करते हो, कौन सी चीज के लिए बना रहे हो, या फिर क्या एड से हम राइडिंग करते हैं। तो जैसे कि रामनाथन सर ने बोला कि सीट और पैर है, तो आपका कांटेक्ट वो है। अभी राइडिंग में हमारे हैंड्स भी काम करते हैं उतने, लेकिन एक चीज होती है बैलेंस देने के लिए। मैक्सिमम जो अच्छे राइडर्स है वो बीट बीट से ज्यादा अपने बैलेंस से घोड़े को कंट्रोल करेंगे, कि एक बैलेंस बनाएंगे। अभी अनिश अनिश भाई है, तो वो उन लोग ने अनिश भाई ने इंटरनेशनली देखा है वो चीज, कि एक घोड़ा और राइडर का तालमेल बनता है और फिर दोनों का बैलेंस बनता है, उसके हिसाब से घोड़ा चल सकता है। आपको उसको थॉर्न बीट लगा के वो खींच के, या दोनों हाथ से खींच के रोको या उसको कंट्रोल करो, दैट इज नॉट द नेसेसरी थिंग। उसको आप अगर घोड़ा बिगड़ा हुआ भी है तो आप उसको टाइम दे के उसको कन्विंस करके आप वो चीज में ला सकते हो। तो मेरी तो प्रैक्टिस जब से मैंने समझी है ये चीज, मैं बचपन से घोड़ों के साथ में हूँ। मैंने मेरे पहले भी जो भी लोग थे मेरे फैमिली में, मेरे दादा परदादा जो भी थे, वो सब पहले यही ट्रेडिशन में थे, क्योंकि ये नॉलेज नहीं था या ये चीज पहले नहीं थी, लेकिन अब डेवलप हो रही है तो लोगों को वो चीज समझने की जरूरत है और वो अपनाना चाहिए। पर ये धीरे धीरे होगा, गुड। जैसे कि हम आपने जो हाँ जी। आपने दो वर्ड्स का यूज किया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि हाँ, हाँ जी। कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन यस। डिफरेंस है सरेंडर और एक्सेप्टेंस। कन्विंस ये होना, दोनों में यस, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस। डिफरेंस है। एंड आई यस थिंक यस। सरेंडर जो घोड़ा है वो अपने आप को ही जी जी। जिसको बोलते हैं अपने आप को ही खो देता है, तो फिर राइडर के साथ में यस राइडिंग क्या यस। करेगा वो, तो फिर अब अगर एक अगर स्लेव की आप तरह हो गया एक। अगर आप थॉर्न बीट यूज करते हो तो आप एक उसकी सोल या दिमाग पे अटैक करते हो और उसको कंट्रोल कर लेते हो, वो बिल्कुल। सरेंडर हो जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक जगह पे ये जो बिहेवियर इश्यूज अपने देसी घोड़ों में आते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि वो डेली पेन ले रहे हैं आपसे। अभी लोग बोलते हैं कि भाई बिल्कुल। रोज मैं उसको प्यार देता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ, पर आप उसको इनडायरेक्ट पेन कितना देते हो? आप मुंह से पहले तो वो दे रहे हो। अभी कांटे वाली बीट लगा के वो उसको गाजर खिलाएगा, तो वो कोई चीज नहीं हुई है, वो पेन तो उसका उधर ही है। तो वही चीज है, अगर मतलब वो कंट्रोल हो गया, वो स्टोर तो है उसके माइंड में, फिर बैड बिहेवियर में कैसे निकलेगा कि कल तो मेरे साथ अच्छे से रह रहा था, आज मेरे को लात मार दिया, आज मुझे काट लिया। ये बहुत बिल्कुल। केसेस होते हैं। अभी जो शौक भी में आ ये जाता है घोड़ा भी। हाँ, फिर वो सोच के उसका दिल तो मर चुका होता है, लेकिन वो एक दिमाग में पड़ा रहता है, वो किसी दिन अचानक आता है। तो ये बिल्कुल। बैड प्रैक्टिस की वजह से ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो
बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग में उसको धीरे धीरे अपग्रेड करके लाया जा सकता है। बाकी थ्रोन बीट इज नॉट द सॉल्यूशन, और वो उससे होता ही नहीं है वो चीज। जी बिल्कुल, ऐसी कई सारी चीजें हैं। अनिरुद्ध, हाँ मैं जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जी जैसे हमने थॉर्नबिट के बारे में बात की, और जो है कि पेस्टेंटाइज के बारे में बात की, रामनाथन ने उसको समझाया। ऐसे और भी काफी सारी चीजें हैं। मैं वापस अमरजीत के पास में आऊंगा। देयर इज अ फेमस जिंजर वाला sure. जो इशू हुआ था, उसको भी मैं पूछूंगा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप कनेक्टेड है सम ऑफ द सोसाइटीज से जो कि ग्राउंड पे काम जी करते जी हैं, एंड आई एम श्योर और भी लोग हैं जो कनेक्टेड है सोसाइटी से। सोसाइटी का जो एक इमेज है, उनकी जो एक रीच है, उनका जो एक इन्फ्लुएंस है, वो ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली जी जब भी हम और शोज, जो शोइंग वाले शोज देखते हैं, एक या दूसरा सोसाइटी उसको करवाता है, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। बट उसी शोज में जब अब जैसे पुष्कर में हम देखते हैं, एक के बाद एक दुकानें लगे रहती है, वहां बिट्स लगी बिकते रहती हैं, है। कांटे वगैरह सब कुछ बिकते हैं। शोज में आने वाले घोड़े जब घर पे रहते हैं तो उनको पेस्टेंटाइज वगैरह वो सबसे कनेक्टेड है। गर्दन ऊपर करके खिलाना ताकि गर्दन ऊंचे करे रहे घोड़े का, वो भी एक प्रैक्टिस है जो है। और ये राइट सब राइट कुछ जी जो है, ये उस सर्कल में हो रहा है जिस सर्कल के साथ में ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो जुड़ी है राइट। ऐसी संस्थाएं जो है, उनका एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, एक रोल है जिसको वो निभा सकते हैं। तो फिर जी भी जी उनके होने के बावजूद अगर इस तरीके प्रैक्टिसेस रेगुलरली चले जा रहे हैं, और अगर हम लोगों से बात करें तो लोग हमको मुंह पे बोल देते हैं कि भाई जैसे हुआ है वैसे होने दीजिए, आप इसमें मत पड़िए, टाइप की सब बातें जी होती हैं। जी तो इन सोसाइटीज का जो रोल है, ये रोल कैसे फुलफिल हो, वो क्या कर सकते हैं और या क्या नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सोसाइटीज के हिसाब से, ये बॉडीज के हिसाब से, वो जो पॉसिबिलिटीज है वो क्यों फुलफिल नहीं हो रही? हाँ, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर सोसाइटीज वगैरह वो ये एज अ इवेंट देखते हैं पूरा, और सब लोगों को साथ में लेके चलने का सोचते हैं। आपसे सोचते हैं कि चलो ये अभी डांस वाला हमने कुछ रख दिया है, तो उसमें थ्रॉन बीट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो नंबर ही नहीं होंगे, घोड़ों के नंबर ही नहीं आएंगे। क्योंकि 99% अपने बोल सकते हैं, गिने चुने एक दो बंदे होंगे जो शादी बीट के ऊपर डांस करवाते होंगे, बाकी सब ऐसे कांटे वाली बीट पे ही करवाते हैं। तो एज ए सोसाइटी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और ये कैसा हो गया है विपुल भाई, एक मेंटालिटी बन गई है सबकी, और मेंटालिटी चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जैसे राइडिंग में हो गया, ये सैडलिंग की भी है, जो कोई ऐसा देखता ही नहीं कि कितने इंच का सैडल लेना है मुझे, कि सिर्फ बोल दिया मीडियम वो दे दो आप, और अभी कानपुर से तो नंबर वो आप पेमेंट करते हो तो हफ्ते में आपके घर पे आ जाता है, फोटोज देख लेते हैं, मंगवा लेते हैं, बस ऐसे ही करते हैं सब। तो इंटरेस्ट लोगों का इसके अंदर आए, तो उसके लिए ऐसे अगर कोई शोज होते हैं, कोई मेले में तो हम ज्यादातर रोक नहीं लगा सकते, पर एज अ प्राइवेट शो जो होते हैं वहां पर हमको 15-20 मिनट का इस चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग उधर ही आते हैं। और शोज में भी आप जैसे बोलते तो पेस्टन टाइज वो पछाड़ी वछाड़ी लगा कर ही बांधते हैं घोड़ों को, जगह तो होती नहीं। वो पहले से प्रैक्टिस ही बन चुकी है हमारे वहाँ, कि शो में ले जाना है तो उसको आदत घर पे डालनी पड़ेगी हमको। डालो। तो यस। दो घंटे लोग बचपन से पछाड़ी लगाने की आदत डालते हैं, कि यस। शो में जब जाएगा तो नाटक नहीं बंधेगा। करेगा और लगा नहीं देगा, उसको बांधना तो पड़ेगा ही। पर अभी धीरे धीरे हम जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं 2013-14 से शोज वगैरह में देखता हूँ, तो अभी धीरे धीरे लोग बढ़ गए कि जो अपना पैडक, फोल्डिंग पैडक लेकर आते हैं, वो बनाते हैं उधर, घोड़ा अपना खुला रखते हैं शोज वगैरह में भी। तो वो वैसी प्रैक्टिस धीरे धीरे चालू होगी, उसमें टाइम लगेगा, पर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा एक ऐसा पॉइंट पे कि ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, 19-20 भी नहीं चलाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें बदलेगी। भले ही हमारे पास एंट्रीज नहीं आती है,
पर हमको बिना लगाम के डांस वाले घोड़े को प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर उसका प्राइस मनी भी ऐसा रखना चाहिए कि चलो बिना लगाम के जो घोड़े को डांस करवा के करेगा, तो धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी ऐसी जब चीजें करेंगे तो। और हॉर्स सोसाइटीज का क्या है, ज्यादातर लोग हॉर्स के बारे में नहीं सोचते, वो पूरे एज ए इवेंट सोचते हैं। उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने रहते हैं, और फंडिंग का देखना है कि भाई कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। तो वो इस सब को ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं मानते वो लोग, कि हाँ ये तो छोटा मोटा है, चलता रहता है। वो सब हिसाब से शोज वगैरह में होता है, प्राइवेट शोज होते हैं, तो उसमें हम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले जैसे देखते थे हम कि कांटे वाली बीट पे शो में प्रेजेंट होते थे घोड़े, अभी नहीं हो रहे। अभी अलाउ नहीं करते आपको, आपको बीट चेंज करने के लिए भेजते हैं। At least तो in धीरे धीरे Maharashtra, in जी Maharashtra, wherever I have done the veterinary service for clearance, I जी have disqualified all the horses that have come to the Yes. meeting. यस सर। Yes. When I say disqualified, they just go back. हम्म। They That's need to it. be strict. So there was a lot of resistance in the first year. In the next year Yes. onward, they don't bring it. Yes. हम्म। There should be That's a strict very good actions. example, sir. That's a very good example. But I think as Anirudh was saying, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारी सोसाइटीज ये सोचती है कि अगर हम ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे लोगों को तो ठीक नहीं, सबको साथ में लेके चलो। तो साथ में सबको लेके साथ में चलो। लेके चलने में हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है वो घोड़ों के कारण है। तो सबसे पहले तो Yes. घोड़ों को जी लेके चलो, उसके बाद सही सबको बात साथ है, में लेके चलो। इनफैक्ट सही मैं बात आपको है। एक एग्जांपल दूंगा। मैंने फेसबुक पे देखा था, एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके सीनियर लोग हैं, पंजाब में एक घोड़े के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। और उसके बाद में उसको फेसबुक पे पोस्ट किया, तो मैंने एक सवाल किया कि सर ये जो घोड़ा जो बिट लगाया हुआ है आपके साथ में खड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये कांटा बिट है, क्या ये कांटा बिट है? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ये कांटा बिट है, अब लोगों का चलन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, और वन स्टेप एट अ टाइम सब ठीक होगा। तो अब मेरा जी ये पूछने का सवाल है कि ये सोसाइटीज जिनके पास में इतनी रीच है, इतना इन्फ्लुएंस है लोगों पे, वो भी अगर वन स्टेप एट अ टाइम करके पहला स्टेप ही अगर नहीं लेते हैं, आई एम श्योर, आई कंग्रेचुलेट यू सर, डॉक्टर रामनाथन, that you guys have done something like that at your shows. हर Because सोसाइटी को इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। I have personally nothing, no pie in the fire. Because I have no horse to sell. I have no horse to सही win. बात, सही बात है सर। I don't own a horse. So I have no problem. I'm not a horse breeder. So I don't have to Yes. satisfy people. Right, sir. And Absolutely. if you take Facebook out of the horse industry, most of them will give up horses. ये 70% of them. वेरी ट्रू। चलिए, They are basically breeding for the Facebook. राइट। Right, sir. Extremely right. अमरजीत, मैं आपसे इस चीज को डेफिनेटली जानना चाहूंगा। ये फॉर मी इट वाज न्यू, ये जो जिंजर वाला केस आया था, हाँ जी। व्हाट इज इट एंड व्हाई डू पीपल यूज इट? ये जिंजर वाला मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे बिफोर पुणे शो। उसमें ये मैंने लिखा था कि कभी अपने पिछवाड़े में भी जिंजर लगा के देखो। राइट। सो सर, so my point was लोग अपने घोड़े को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसकी पूंछ अरेबियन हॉर्सेस की तरह ऊंची रख के ट्रॉट करवाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जिंजर का जूस अप्लाई करते हैं पिछवा अंडर द टेल। मुझे भी बहुत खराब और ताज्जुब लगा था जब मुझे पता चला। मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ वो बात को पता चले। Actually, it is a very common practice in the Sir, olden time Arabs. Wow. It So is not something new. It is not something these people have invented. अच्छा, It has been there for a very long time. it was new for me, sir. Capsaicin, Yes, balm. capsaicin, Yes, ginger, capsaicin, olive oil mixed with pepper, all that is yes, being yes, done. yes. So that, So, they are on an edge all the time.
very It bad is practice. easy to So spot them. It's easy to spot them because very easy, very easy. very easy When to I came spot to know them. that, पहले मुझे ऐसा था कि सर मैं हैंडलिंग करता हूँ घोड़ों की, तो मेरा घोड़ा ऐसा प्रेजेंट क्यों नहीं होता है? तो मुझे अपने से ऐसा होता था कि मेरी ट्रेनिंग में ऐसा क्या रह गया है कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड देन आई केम टू नो दैट ये चीज कुछ और ही है. एंड देन इट वाज अ वेरी बैड टू नो दिस. बट वो बाम लगाते हैं, ये अदरक का जूस लगाते हैं ताकि वो घोड़ा, एक तो पहले घोड़ा तन के खड़ा रहता है क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होता है और उसको जलन होती है, इसलिए वो टाइट रहता है हमेशा. उसका ध्यान पीछे की तरफ रहता है, टेल ऊंची रहती है और एक जगह पे स्टक हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग तो पीछे है. अगर घोड़ा फ्री होता तो आजू बाजू का चीज देख के वो डिटरमाइन करता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या दूसरे घोड़े को पे अटेंशन देके अपना रिएक्शन दिखाता. लेकिन कंटिन्यूअसली ये अभी बताऊं तो अभी के शो के अंदर 80% लोग यही चीज करके खड़े रहते हैं. और तो ये सब और चीज है जो सोसाइटीज को देखना चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए. ये मेरा इंटेंशन वही था, वो चीज को फेसबुक पे डालने का कि मतलब कमिटीज को पता चले. वो पता तो है उनको, लेकिन पता तो है. लोगों ने पता तो उनके है लेकिन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है या किसी ने बोलना शुरू किया है, तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए. ध्यान देना तो चाहिए. मैं See, that is my contention, is that the indigenous horses have become like dog shows. They come, Yes. show and go. Yes, The yes. horses are not meant for that. They are meant to be ridden. No, They no, are no. meant to be in an I athletic would say activity. I would say they are not horse lovers, but they are like ego buyers of the horses. They keep the No, no. horses. See, unless there is an end athletic event, an end athletic purpose for the horse, it is very difficult to control the way they are fed, because 90% of these heavy bred horses, heavily fed horses, they precipitate with laminitis. Yes. Right. As a farrier and a veterinarian, I have seen more laminitis in indigenous horses than any other breed in the world. Yes, yes, yes. Wow. 100%, because they That is- are never used That for is any other only things. because they are fed lot of calorific diet, which the horse is not supposed to eat. They are Yes. supposed to be herbivores. They are supposed to eat a low grade hay, not a very high Yes. quality hay also. Actually, it Yes. is cheaper to breed and maintain horses, feeding them low grade hay. It is lot healthier and happier horses you will have Right. Sir. than feeding all sorts of things like ranging from Dabur Chyawanprash to Complan. Right. So can you see my eyes? My eyes are like out there. Dabur Chyawanprash. Yeah, Are you serious? yeah, I can pop it out, pop your eyes a lot more by telling a few more. Seriously. Oh my God. Sir. I have seen people giving the tablets of height for humans. Yes. जो बच्चों को टैबलेट्स Calcium. देते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, वो टैबलेट्स घोड़ों को देते हुए मैंने देखा हुआ है. Complan I have seen, because the Complan increases height in human in the advertisements. So That's Yeah. what. And there are Seriously. so many. the Oh my bottom God. line is they all come down precipitating with laminitis. I wanted to ask you this question. I think it was on the list as well. The high carb diets that they are fed to the horses. I'm Yes. surprised that laminitis. How can the horses avoid laminitis if they go on those high carb They diets? cannot avoid laminitis as long as you're feeding unnatural, calorific, easily digestible sugar diet. I want to show you why and how it causes laminitis. This is a day-old foal, 3D model. Yeah. Yes. It's a very large, beautiful feet and a very thick lamina over here. Right. This is how they are born. And until humans domesticated the horses,
they never had laminitis. Oh. It is so this is the lamina where it attaches the hoof to the pedal bone. This is the pedal Right. bone, and this is the hoof that you see it as hoof, and this space between the pedal bone and the hoof itself is held by lamina. Lamina is nothing but finger-like projections on the hoof as well as on the lamina, which shakes hand and holds tight. Right. It's very richly supplied with blood vessels. Oh, So when you have a very high sugar content in the blood, and the horses cannot sustain it, they have a peripheral vasculopathy, and that releases it. Once the bone is released from the hoof is allowed to rotate within that. The bone keeps rotating it. That ends up having, and it's an excruciatingly painful disorder with horses. Absolutely. And the biochemical markers of pain is equivalent to end-stage pancreatic cancer in human that they have realized. Oh my God. It's an extremely painful thing. Anybody who has shut a car door with their little finger would understand what sort of pain we will have. And imagine you have to too walk much. on those fingers. Oh, too You much shut a painful. I car. think that's another session that we would like to have with you. I think that requires a lot of people to see what's going on over there, because So I think I illiteracy is actually to blame. I give a lot of counseling to a lot of people on feeding and laminitis related, because laminitis, when I was practicing, was good money for me, because the horses, I make special shoes for them. But I hate doing that because it is caused by humans. Right, sir. Absolutely. Yeah, and there's another practice that I would like, Anirudh sir, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जी अनिरुद्ध, गुजरात में आपके बैकड्रॉप में ये होता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे काठियावाड़ी घोड़े हैं गांव पे जो पिछले पांव पे खड़े करके और बाउंस करके नचवाते हैं और बाउंस उसका कर करने कंपटीशन होता है, तो जी 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 ये क्या चीज है? वो कंपटीशन नहीं ये है क्या पर वो चीज है? इसको आप ट्रेडिशन जैसा है। वो शादी में 15-20 हाँ घोड़े इकट्ठे करने हैं और 2 पाँव पे चलाने हाँ हैं। हाँ, जो जिसका अच्छा चलता है वो बढ़िया है, उसका बस नाम है, उसका नाम है कि भाई ये बढ़िया घोड़ा उन्होंने कूदा है। वो मतलब जब वो घोड़े एक, खरीदते हैं तो ऐसा नहीं पूछते क्या उम्र है, क्या हाइट है, कि हाँ, कैसा कितना है, वो कूदता है। क्या कूदता है कि नहीं कूदता है, पहले ऐसे पूछते हैं। हाँ, सीधे नहीं चलना तो चाहिए, वो दो आगे पैर पे ही बढ़ते चलना हैं। चाहिए। तो ये वो कैसा बोलते हैं कि पहले के टाइम पे ये वॉर हॉर्सेस थे तो प्रैक्टिस करवाते थे हाथी के माथे पे 2 पैर करके, वो I वॉर के don't टाइम think पे they won प्रैक्टिस big करते wars. थे, ऐसी I बातें don't think they करते। won big wars with these horses. जी I जी strongly believe that they are not great war horses, personally. जी जी And that is the reason why historically people have been eyeing and buying horses from Arab. मैं तो सर ऐसा सोचता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वॉर हुआ और उसमें हॉर्स यूज हुआ तो वो वॉर हॉर्स ही हुआ। जस्ट ऐसी बात है कि हमारे राइट, देश में सिर्फ वॉर नहीं हुआ क्या, मतलब हुआ है। हमारे देश में वॉर हॉर्स है, दूसरे जगह पर दूसरे देशों में भी वॉर हुए तो वहां से तो Of वॉर course, हॉर्स तो हो गए उधर के भी। Second World War, horses were pulling cannons. यस, ड्राफ्ट And, हॉर्सेस, and they were trained to keep quiet when the cannon was getting fired. यस, एंड दे यूज्ड टू सिट डाउन व्हेन They used to बैकफायर्स sit down when the cannon was fired. यस, So we can make the horse do anything with love and with यस friendship. exactly, with love, yes. That's convince them to do whatever you want. Yeah, you can convince them to pull a cannon and then the cannon Anything, yes. fires and they are not even bothered. So those are also war ट्रू, horses. यस यस। Every horse is war So horse. we don't have exclusive war horses बट ये only in हमारे the यहाँ world. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई है कि भाई ये वॉर हॉर्स है, हमारे वॉर हॉर्स है, ऐसा करके। What और about मतलब Genghis Khan's horses? They are not war horses.
So it's actually a marketing gimmick. यस Gimmick, मार्केटिंग yes. गिमिक और ये स्पेशली यहाँ पर तो Wrong way of काठियावाड़ glorifying. में हाँ ग्लोरीफाइंग और दूसरा ये ईगो आ जाता है इसके अंदर। वो ट्रेडिशन है सालों से शादी वगैरह में चलता है ऐसा। तो फिर हम कुछ बोलने जाते हैं तो हमको मारने आते हैं लोग, ऐसे लोग है कि आपको मारने ही आएंगे कि भाई ये हमारा घोड़ा है, हमको और हमारे घोड़े से प्यार नहीं होगा क्या। तो ये तो होता वो रहता है, बोलते हैं, चलता रहता है, यस यस, वो ऐसी बोलता है बातें कि होती बोलते है। रहते हैं कि मेरा घोड़ा है, मैं कुछ भी करूं। ये उनका हाँ कॉमन स्टेटमेंट रहता है, मेरा घोड़ा है, मैं पर खिलाता फिर हूँ। भी पहले से थोड़ा बहुत अभी अच्छा हुआ है कि लोग ये कम हो बहुत गए, कम एक कम हो गए, अवेयरनेस हुई है। पर क्या ये है कि और भी कम होनी चाहिए बिकॉज अभी भी खुल नंबर्स के बहुत बड़े लोग, हैं। जी जी जी, बहुत बड़े खुल हैं के लोग पर कम हो रहे हैं। बोलते नहीं है। हाँ आपने जैसे बोला कि तो सोसाइटीज है, वैसे भी वो वहां पर जो कम्युनिटीज है, कुछ कम्युनिटीज है उनके अंदर ज्यादा है ये सब चीजें। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग है उनको आगे आके ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए या फिर बंद करवानी चाहिए। अगर कोई कर रहा है करवाना चाहिए, तो उसको जाके बंद करवाना चाहिए कि भाई ये बंद कर दो, घोड़ा लेके आए समझ हो देनी तो चाहिए। ऐसे। तो उनको थोड़ा ऐसे समझाना और समझाने वाले भी अभी तो कैसे है, आप हॉर्स सोसाइटीज की भी अपनी बातें होती है, वो होता है। तो शोज वगैरह में भी आपको कोई अभी समझा रहा है तो 10 जने में से आप 8 जने ऐसे होंगे कि आपको बाद में लगेगा कि भाई इससे तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, तो मुझे जन्म से लेके आज तक का सबका श्रेय ये भाई का ही है कि जी ये हाँ, 2 बातें भी किसी को आपने पूछ ली तो बाद में तो ऐसा सब पोर्ट्रे करेगा कि भाई जी पूरा इसको मैंने ही पैदा करके बड़ा सिखाया कर दिया और है। इसको सब मैंने ही कर दिया है। लोग ऐसे भी है हॉर्स मार्केट के अंदर। तो उस No, we हिसाब are से लोग talking about सुनते भी नहीं horses. है। We are not talking about people. Now let us बट confine to पीपल, horses. यस यस सर, पर पीपल no, की that's true, Dr. मेंटालिटी, Ramanathan. यस सर, पर Exactly, they are लोगों the की horses. मेंटालिटी चेंज होगी तो ही तो हॉर्स का बेटरमेंट होगा। उनको सिखाएगा कौन, उनको कौन बताएगा कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। जैसे आपने एक स्टैंड लिया कि चलो ये बीट नहीं चलेगी, तो एक जगह पर ही ऐसा होता है, पर धीरे धीरे लोगों को सिखाना भी पड़ेगा। और नए लोग जो है, जो नए जुड़ते हैं, जो हॉर्स इंडस्ट्री में नए आते हैं, उनको बेसिक से अच्छा मिलेगा ट्रेनिंग वगैरह। राइडर की भी ट्रेनिंग होती है, हॉर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होती है, वो अच्छी अप्रोप्रिएट होगी तो आगे जाके हॉर्स कीपिंग अच्छे से होगी। क्योंकि आजकल तो क्या हॉर्स एक कीपिंग अलग अलग चीज हो गई है। मतलब जैसे सर ने बताया कि लोगों को बस सिर्फ शो में ले जाना है, ये डेफिनेशन करना चेंज है हो गई है। वो। हॉर्सेस आर लाइक तो बिग साइज डॉग्स। आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन के जरिए हमने इस डिस्कशन को पब्लिक फोरम में खोला है, वो तो एक जी चीज है अपनी जगह, बट ये रास्ता बहुत लंबा है। आप हम सब जो यस, लंबा यहाँ पे है। बैठे हैं सब घोड़ों से प्यार लंबा करते है। हैं, वी ऑल आर हॉर्स लवर्स, वी वुड डेफिनेटली वांट। वो दूर होता है या नहीं होता है ये तो किस्मत का बात है, यस टाइम का बात है, बट वी ऑल वांट कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। मैं आप जी सबसे अगर एक सवाल, अगर एक सवाल नहीं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूं कि एक लाइन में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस फील्ड में, इस टॉपिक के ऊपर में, इरेडिकेशन की तरफ, इस चीज को खत्म करने की तरफ, एक लाइन में अगर कुछ आप बता सके तो मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक स्पीकर एक लाइन बताएं ताकि हम उस चीज को एज अ सुझाव ले और परहैप्स नेक्स्ट स्टेप पे हम काम करें। ऑब्वियसली सिर्फ ISHEL ही नहीं, हमको सबको साथ में लेके चलना है। आप लोगों जी के साथ, आप जैसे जानकार लोग जो एक हमारे लाइन साथ में एक लाइन हमें बोलना है। तो you have to treat horses like herbivores and give them good quality hay and roughage. That itself will एब्सोल्युटली, solve the problem of laminitis. Will also keep them busy during the whole day, eating slow and bits and pieces, the way the horses have been evolved over 70, 80 million years, eating 18, 19 hours a day. Now they're all on very high concentrated diet that A causes laminitis and B they have whole lot of 22 hours in the day to do nothing. It also caused behavior issues. Yes, and because they have nothing else to do, it causes the Yes, behavior. yes, If you yes. keep giving them a small quantum of hay and a good quality hay throughout the day, and they eat 16 to 18 hours a day,
and that keeps them occupied and that keeps their intestinal health well Yes, yes. and avoids laminitis to a large extent. Thank you, sir. Thank you. Anish, आप क्या बोलेंगे? So at a very fundamental level, I would say that we as humans, we have categorized animals in terms of a good animal, an inferior animal, an important animal, an unimportant animal. All these definitions are ultimately responsible for how they end up being treated. We can see that well-established breeds of dogs are kept in homes and they are taken very good care of in most cases. But the strays are suffering on the road. So this is all a certain definition that there is a preconceived ideas about certain breeds, certain animals. So first of all, I think this should go. The first step would be that treat animals as equals. That is a very long process I'm talking about. वो हो नहीं पाएगा, लेकिन जब भी होगा तो somewhere if the target is high, we'll at least reach somewhere where we need to. Second is engagement of horses should be taken up seriously. They are just standing there in their stalls and doing nothing all day. Take them out for a ride, take them for exercise, give them something to be engaged with, take them for walks, whatever it needs to. You have to bring out their curious side. Training is basically all about exploring their curiosity and rewarding them. So that concept has to be promoted very strongly instead of forcing them to do something. So out of fear, if the horse is performing that, I don't think is training. Take advantage of their curiosity and reward them when they are doing what you want them to do. So when these two are promoted in the right way, I think all the other sports will gradually fall in line. But the fundamental right here, where you start respecting your animal, you see the way some dogs are cared for in the house, in the homes. That is the level of care I would say that horses also deserve. Just because they are at the farm and you're not going there all day, they're left to the caretaker's mercy. That does not mean that they should be neglected. Thank you. I think those are very valid points. Anirudh Singh, आप क्या बोलेंगे? जी, मैं एक कैसे इस लाइन चीज में को आप tackle किया जाए? जी एक लाइन में बोलेंगे तो थिंक अबाउट द हॉर्स फर्स्ट. हमको घोड़े के बारे में पहले सोचना है, तब तो जाके हम उसको अच्छे से करेंगे. आजकल हमको खुद को ये करना है, मुझे ये राइड करनी है और घोड़ा नहीं करने दे रहा है, तो फिर मैं मारूंगा, उसको पीटूंगा और दूसरी तरीके से. पर घोड़े को क्या चाहिए, उसको कंफर्ट आप दोगे तो आपको वो काम देगा धीरे धीरे शांति से. तो वो हमको घोड़े का पहले सोचना चाहिए. तो धीरे धीरे इसमें क्या है कि हम, जैसे आपने ये आज बहुत ही अच्छा एक मीटिंग ये रखी है कि इसके बारे में तो सोचेंगे हम. मैंने तो सबसे पहले यही सोचा कि मैंने आज तक क्या किया है कि क्या नहीं किया है. देखिए हम सब एक लेवल से सीखते हुए आते हैं, आगे जाके नया नया देखते हैं, नया सीखते हैं. तो मैंने अभी तक घोड़े को मारा भी है, पहले मारता था, फिर धीरे पता चलता है अपने को कि भाई ये नहीं करना चाहिए ऐसा. और घोड़े के ऊपर आप रिफ्लेक्शन, आप अगर उसके साथ अटैच है और रेगुलर उसके साथ इंटरफेरेंस होता है आपका, तो आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा उसके बिहेवियर में. तो वो धीरे धीरे जैसे सीखते हैं, तो ऐसे मैं सोचूंगा कि आपने जैसे ये सेशन रखा है, तो ऐसा देख के दूसरे 10 लोग में से 2 लोग भी अच्छे ऐसा सोचने का चालू करते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है. मैं ऐसा सोचता हूँ. तो ये आपको सबसे बड़ा थैंक यू कि ऐसा कुछ आपने सोचा. और आगे जाके हम भी हमारी खुद की जो एडवाइस हम देते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं हम, पर हमको खुद को जो क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर भी हमको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा. जैसे सर ने जैसे किया है वो मैंने देखा भी है, वो बोलना और करना उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. कि एज ए शो के अंदर आपको बोल देना कि ये घोड़ा अभी चला जाएगा, घर पे नहीं आएगा, अभी शो में एंटर नहीं होगा, तो वो करना एक बहुत बड़ी बात है. और वो हम अभी आज ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा. थोड़ा वो ऐसा हमारे मन में ऐसा डिटरमाइन करना पड़ेगा हमको. और हमेशा घोड़ों का पहले सोचना चाहिए. जी बिल्कुल. इसीलिए गुड दैट यू आर सेइंग, बिकॉज हमारे ISHEL में हमारा एक मोटो है,
हमारे सब टी शर्ट्स जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्समैन जाते भी हैं पार्ट लेने के लिए, तो टी शर्ट्स पे उनके कंधों पे बाहों पे लिखा हुआ रहता है अश्व सर्वोपरि, द हॉर्सेस कम फर्स्ट। यस और उसी यस हिसाब से जो है वो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, और उसी के हिसाब से हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे लोग काम करते हैं। बट आई थिंक एक टीम में काम करने से नहीं होगा, घोड़े हमारे भी वही हैं, बाहर भी वही हैं, हम सबसे प्यार जी करते जी हैं। एक जी रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि ये जड़ से जो है इस चीज को हम कुछ बदलाव ला सके। अमरजीत, आप क्या बोलेंगे? सही बात है। मैं बोलना चाहूंगा कि घोड़े की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो वो सारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको बस खाली इतना करना है कि घोड़े की जगह अपने आप को रख देना है, कि अगर आप जो कर रहे हो उस जगह पे घोड़े की जगह आप हो तो आपको कैसा लगेगा। इट इज सिंपल एज दैट। और रामानाथन सर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, बताई थी, यू नीड टू थिंक लाइक अ हॉर्स। आप घोड़े की तरह एब्सोल्युटली, सोचो और एब्सोल्युटली, आपको सब खुद रियलाइज हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप घोड़ा खड़ा है या घोड़े को आप कुछ कर रहे हो तो उस जगह पे आप खड़े हो तो आप क्या सोचोगे वही सोचोगे, उसमें सब सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट्स। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। हम पहले कनेक्टेड नहीं थे, अनिल सिंह जो है वो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट बाकी ऑडियंस मेरे लिए नए थे। और मेरे को लगता है कि इस डिस्कशन के थ्रू हम कनेक्टेड भी हो गए हैं। एंड आई थिंक एक कनेक्टेड कम्युनिकेशन अगर हम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ग्राउंड में अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बदलाव तो हम लेके आ ही सकेंगे। कर तो सकते हैं। यस। चाहत तो जी यही है। अब हम एफर्ट्स ही कर सकते हैं, बाकी जो रिजल्ट है वो तो लोगे तो और भगवान के हाथ में है। बट आई थिंक इस श्योर चीज को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और भी इश्यूज पे हम बात करेंगे। एंड आई थिंक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कनेक्टेड रहिए हमारे प्रोजेक्ट के साथ में अपनी अपनी जगह, बिकॉज आप लोगों के श्योर। पास में नॉलेज बहुत है जो हम शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। So thank you so much everyone for taking your time out and participating and having this discussion with us at ISHEL, and thank you Viniti as well. Viniti is disturbed with her throat, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकती, इसलिए मैंने विनीति को ज़्यादा stress भी नहीं किया, but she is there, she is coordinated in the background. Thank you Viniti so much for all your assistance, and once again all the speakers, thank you very much. And I think we can end this session on a very positive thought and positive note कि कुछ तो करेंगे, श्योर हाथ करेंगे, पे हाथ जरूर रख पक्का के करेंगे। बैठे पक्का नहीं करेंगे रहेंगे, कुछ तो पक्का करेंगे। जी यस। Thank you All so right. much. Thank you थैंक so थैंक यू much, सो sir. मच। Everybody, good luck.